Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jai Gopi Janavallabha Giri Vardhanya. Jai Gopi Janavallabha Giri Vardhanya. Sudanandana Braja Jananya. Jasodanandana Braja Jananya. Yamuna Tira Bharyam Yamuna Tira Bharyam Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Kunja Vihari. Jaya Gopi Janavallabha Giri Vardhanya. Jai Gopi Janavallabha Giri Vardhanya. Jasodanandana Braja Jananya. Yasodanandana Braja Jananya. Jamuna Thira Bharyam. Yamuna Thira Bharyam. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey. Hey, Hare Rama, Hare Rama. Hey. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey. Krishna Krishna,
Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Evo. Hey, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey, Nitai Gaur. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Nitai Gaur. And Nitai Gaur, Hari Bham, Hari Bham, Hari Bham, Hari Bham. Nitai Gaur, Hari Bham, Hari Bham, Hari Bham, Nitai Gaur, Hari Bham. Hey, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Hey Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Jaya Guru Dev. Premanande, Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 14, Brahma's Prayers to Lord Krishna, text number 28. Antarbhavanante bhavatan eva yatatvajanto mrigyayanti santaham ashantamapyatyahim antarenam shantam gunam tam kim yanti shantaha atarbhavenanta bhavatam antarbhavenanta bhavatam eva yatadvajanto mrigayanti shantaha ashantam apyantyahim antarena shantam gunam tam kimu yanti santaha.
Ladies? Anyone else? Anta Bhave. Within the body. Ananta. O unlimited Lord. Bhavantam. Yourself. Eva. Indeed. He. Certainly. Atat. Everything separate from you. Tvajanta. Rejecting. Nirgayanti. Search out. Shanta. The saintly devotees. Asantam. Unreal. Api. Even. Anti. Present nearby. Ahim. The illusion of a snake. Antarena. Without negating. Shantam. Real. Gunam. The rope. Tvam. That. Kim U. Whether. Yanti. Appreciate. Shanta. Persons who are spiritually situated. Translation. O unlimited Lord, the saintly devotees seek you out within their own bodies by rejecting everything separate from you. Indeed, how can discriminating persons appreciate the real nature of a rope lying before them until they refute the illusion that it is a snake? अनुवाद। हे अनंत, संतगण आपसे भिन्न हर वस्तु का तिरस्कार करते हुए अपने ही शरीर के भीतर आपको खोज निकालते हैं। निस्संदेह भेदभाव करने वाले व्यक्ति भला किस तरह अपने समक्ष पड़ी हुई रस्सी की असली प्रकृति को जान सकते हैं जब तक वे इस भ्रम का निराकरण नहीं कर लेते कि यह सर्प है। Purport. One may argue that a person should cultivate self-realization and at the same time pursue sense gratification for the material body. This proposition is herein refuted by the example of misidentifying a rope as a snake. One who mistakes a rope for a snake becomes fearful and thinks of the so-called snake. But upon discovering that the so-called snake is actually a rope, he experiences a different emotion, relief, and can then ignore the rope. Similarly, because we misunderstand the material body to be the self, we are experiencing many emotions in relationship to the body. Upon discovering, however, that the body is simply a bag of material chemicals,
we carefully note how this illusion was created, and then we lose interest in the body. Discovering that we are actually an eternal soul within the body, we naturally focus our attention on the real self. Those who are saintly and wise always cultivate Krishna consciousness, spiritual knowledge, having transcended the foolish misidentification of the body as the self. Such Krishna conscious persons go on to realize the Supreme Personality of Godhead, who dwells within the material body as the Super Soul, the witness and guide of every living entity. Realization of the Super Soul and the individual soul is so pleasing and satisfying that a self-realized person automatically gives up everything irrelevant to his spiritual advancement. तात्पर्य: कोई तर्क कर सकता है कि मनुष्य को चाहिए कि आत्म साक्षात्कार का अनुशीलन करने के साथ ही साथ वह भौतिक शरीर के लिए इंद्रिय तृप्ति में लगा रहे। इसका निराकरण यहाँ पर रस्सी को सर्प समझने के दृष्टांत द्वारा किया गया है। ब्रह्मवश रस्सी को सर्प समझने वाला व्यक्ति भयभीत हो उठता है और तथाकथित सर्प के विषय में सोचता है, किंतु यह पता चल जाने पर कि तथाकथित सर्प वास्तव में रस्सी है, उससे भिन्न भाव उसासी का अनुभव होता है और तब वह रस्सी की अवहेलना कर देता है। इस तरह चूंकि हम भौतिक शरीर को भ्रमवश आत्मा मान लेते हैं, अतएव शरीर को लेकर अनेक भावों की हमें अनुभूति होती है, किंतु यह पता चलने पर कि यह शरीर भौतिक रसायनों की झोली मात्र है, हम ध्यान पूर्वक सोचते हैं कि यह भ्रम किस तरह उत्पन्न हुआ है और तब शरीर के प्रति हमारी रुचि नहीं रह जाती। यह जान लेने पर कि हम शरीर के भीतर शाश्वत आत्मा हैं, यह स्वाभाविक है कि हम अपना ध्यान असली आत्मा पर एकाग्र करते हैं। जो लोग संत स्वभाव के तथा बुद्धिमान हैं, वे सदैव आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करते हैं, क्योंकि वे शरीर को आत्मा मानने की मूर्खतापूर्ण गलत पहचान को त्याग चुके होते हैं। ऐसे कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों को शरीर के भीतर परमात्मा रूप में वास करने वाले भगवान की अनुभूति होती है, जो प्रत्येक जीव का साक्षी एवं मार्गदर्शन है। परमात्मा तथा आत्मा की अनुभूति इतनी सुखद तथा संतोषप्रद होती है कि सिद्ध व्यक्ति उन सारी बातों को स्वयमेव छोड़ देता है जो उसकी आध्यात्मिक प्रगति से संबंध नहीं रखती। Om Agyantimirandasya Gyanajana Salakaya Chaksu Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Ma Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvasesa Sunyavadi Paschatya De Satarine Vanchakalpa Tarubhischa Kripa Sindhu Vaevacha Titanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namaho Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Houda Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama. So Krishna begins his instructions to Sri Arjuna. He begins with this principle that the body and the self are two different entities. तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना उपदेश इस प्रकार से इस सिद्धांत के अंतर्गत देते हैं कि देह और देही भिन्न हैं। And Krishna spends many verses, actually from verse number 12, starts with 11, but it begins on 12 and all the way up to verse number 29. It continues to show the distinction between matter and spirit, between the self and the body, between what is permanent and what is temporary. तो 11 से लेकर 29 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह निर्देश देते हैं कि पदार्थ में और चिन्मय वस्तु में, देह में और देही में और
अस्थाई और स्थाई वस्तु में क्या अंतर है। Without a clear understanding and even a sense of realization of the difference between the body and the soul, one cannot really act on the spiritual platform as it's explained here. तो यदि किसी को पूरी समझ ना हो तो कोई भी आत्म साक्षात्कार के इस स्तर पर काम नहीं कर पाएगा, जैसा यहाँ बताया गया है। And the purport, and Lord Brahma indicates, and the purport explains that one has to have a clear understanding that the body is different than the self. यहाँ पर तात्पर्य में ब्रह्मा जी पूरा स्पष्ट तरीके से बताते हैं कि देह और देही में अंतर है। It seems like he says then you can then engage in activities of the nature of the spirit. और उसके बाद फिर हम आत्मा के अनुकूल जो गुण हैं उसके अनुसार कार्य कर सकते हैं। The body is always with us. We are constantly associating with the material body. तो यह शरीर तो हमारे साथ हमेशा ही रहता है, हम सदैव भौतिक शरीर का ही संग करते हैं। And due to that continuous association and all of the association we've had for previous lives in different bodies, it's very difficult, even for those who engage in devotional service, to understand that completely that we're not this body. चूंकि हम सदैव भौतिक शरीर का ही संग कर रहे होते हैं और फिर पुराने कई जन्मों से हम भौतिक शरीर की धारणा को लेकर चल रहे होते हैं, इसी कारण जो भक्ति में ही सेवा में निरंतर लगे रहते हैं उनको भी यह समझने में बहुत समय लगता है कि वे शरीर नहीं है। And the body requires attention, और इस शरीर को ध्यान की आवश्यकता होती or है, at least some maintenance. इसको संरक्षण की भी आवश्यकता होती है। One has to carefully discriminate between activities that are external to the self, which is bodily maintenance, and the extensions of the body, which come in the form of society. As Prabhupada says, family, society, love, family members, all of the extensions that come in relationship to the body that we have in this material world. तो इसलिए हमें पूरा सही समझ होनी चाहिए कि हमारे शरीर को और यह समाज और परिवार की हमारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। No, it's very difficult, even one who can theoretically understand I'm not this body, to somehow act on the spiritual platform completely requires one to be completely convinced and realized that I'm not this body. तो यदि कोई सैद्धांतिक रूप से समझ भी चुका है कि वह शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी उसको यह पूर्ण विश्वास होने में बहुत ही समय लगता है कि वह यह शरीर नहीं है। As it's indicated here, otherwise it becomes impossible to understand the difference between what is real and what is temporary. तो जैसा भी यहाँ पर संकेत दिया गया है कि यह समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि सत्य और असत्य क्या है। You see the example of the 6 Goswamis of Vrindavan. हम वृंदावन के 6 गोस्वामियों का उदाहरण देखते हैं। They were so absorbed in engaging in activities of devotion, writing books, opening temples. हम देखते हैं कि वे भक्ति में ही सेवा में इतना नियोजित थे, सदैव पुस्तकें लिखा करते थे, मंदिर खोल रहे थे, that they had no time to take care of the body. कि उनके पास शरीर का ख्याल रखने के लिए कोई समय ही नहीं था। They developed this taste for spiritual activities that they forgot to eat, forgot to sleep, and if they did, was very little, hardly enough for any body to be maintained. उन्होंने आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए इतना रस विकसित कर लिया कि वह अपने शरीर के लिए, खाने सोने के लिए बिल्कुल भी समय ही नहीं देते थे, अगर देते भी थे तो बहुत ही नगण्य मात्रा में। You might think, well, their body was okay, was going on nicely. No, Prabhupada actually mentions that their body was actually deteriorating and falling apart, but still they didn't give it any attention. तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि हमारा शरीर अच्छा चलता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं
शरीर का क्षय होता जाएगा और वह अंत में विनाश हो जाएगा। Visayan vinivartante niharasya dehinam. Pasyam barm diswad nivartante. Visayan vinivartante niharasya dehinam. What's the next? One at a time. One can only hear one. What's the third line? Vaso rajam vaso pyasya param diswan nivartante. So one gets a higher taste, one can give up the lower taste. The lower taste is simply the activities in the material world. उत्तम रस का आस्वादन करने पर व्यक्ति निचले स्तर के रस को छोड़ सकता है और यह जो निचले स्तर का रस है वह है भौतिक क्रियाएं। We constantly hear from the scriptures, from the spiritual teachers, and from other sources, we are different from the body. We hear it all the time. तो हम देखते हैं कि हम निरंतर रूप से शास्त्रों से, आध्यात्मिक गुरु से सुनते रहते हैं कि हम यह शरीर से भिन्न हैं। And this hearing it continuously helps to bring about the realization, I'm not this body. और सतत रूप से सुनने पे हमें यह साक्षात्कार होता है कि हम यह भौतिक शरीर नहीं है। The difference between theoretical knowledge and realized knowledge is the difference between reading the menu on about the food that is about to eat and eating the food. तो सैद्धांतिक ज्ञान और अनुभूत साक्षात्कार हुए ज्ञान में अंतर ये है कि जो भी हमारे पास जैसे खाने के लिए कोई मेनू आता है तो उसको पढ़ना और उसको फिर खान के पता करना। Reading the menu gives you an idea, but it's not giving you any experience. तो मेनू पढ़ने पे हमें पता चलता है लेकिन उससे हमें खाने का स्वाद नहीं पता चलता। Therefore, only when we actually realize we're not this body can we get fully absorbed in devotional service. That's what this verse is saying. तो यदि हम पूरी तरीके से यह अनुभूति कर लें कि हम यह भौतिक शरीर नहीं है, तभी हम आध्यात्मिक सेवाओं में नियोजित हो सकते हैं। And the conjecture is, many times we think, well, I know I'm not this body, but still the body is required. I need it. I have to take care of it. But then again, it mentions in Chaitanya Charitamrita, there's 22 ways to perform sense gratification. तो तथाकथित रूप से हम यह सोचते हैं कि हम यह शरीर नहीं है, फिर भी शरीर की आवश्यकताएं तो पूरी करने के लिए हमें कुछ जरूरतें पड़ती हैं और चैतन्य चरितामृत में ऐसा बताया गया कि कुल 22 प्रकार हैं जिनसे हम इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं। There's a long list. It's in the beginning of the 4th chapter of Adi Leela, which describes how sense gratification can manifest in different activities within this material world, such as political action. One of the things is health directives. That's the exact word. People get so involved or absorbed in taking care of health, it becomes a sense for a principle of enjoyment, just to take care of the health. Yeah. आदि लीला के चौथे अध्याय में चैतन्य चरितामृत में ऐसा बताया गया है कि हम किस प्रकार से अपनी किन किन क्रियाओं के माध्यम से इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं। जैसे कि उसमें ये बताया गया कि यदि हम अपना स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने में लग जाएं तो हम इतना ज़्यादा स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हो जाते हैं कि वो स्वास्थ्य का ख्याल रखना ही अपने आप में इंद्रिय तृप्ति हो जाता है। And today there's so many products and so many advertisements about how you can keep your health together. तो आज के समय में बहुत सारे उत्पाद और विज्ञापन हैं कि आपको स्वस्थ किस तरह रहना है। But real health is chanting Hare Krishna. लेकिन जो वास्तविक स्वास्थ्य है वह है हरि नाम का जप करना। We experience that. Sometimes we're sick, right? तो हम अनुभव करते हैं और हम यह कहते We're भी हैं feeling very tired. कि मैं बहुत ही थकान महसूस कर रहा हूँ। There's something wrong. इसका मतलब कुछ गड़बड़ है।
we start chanting, फिर हम जप करना शुरू करते हैं and after a while, all of these things go away. और थोड़ी देर बाद सारी समस्याएं चली जाती हैं, Because the energy force in the body is the soul, which is nourished by the glorification of the Lord to the holy name. And that gives energy and strength. तो हमें जो ऊर्जा मिलती है वह हमारी आत्मा को भगवान के नाम के जप करने के माध्यम से मिलती है, उसके कारण हमें शक्ति मिलती है. So how is it possible, that people can pretty much neglect all of the activities of the body, including eating and sleeping, and still be fully engaged 24 hours in devotional service? Because the spiritual energy is alive and is giving nourishment, enthusiasm, and what we say, what's the word? It's giving everything one needs to practice Krishna consciousness. तो भला यह कैसे हो सकता है कि कोई अपने शरीर का पूरी तरीके से ख्याल रखने में लगा रहे, उसके बाद आध्यात्मिक गतिविधियों का भी अभ्यास करे जिससे वह भक्ति कर सके. वास्तव में ये जो आध्यात्मिक क्रियाएं ही हैं जिससे हमें जीवन में हमें जीवन मिलता है, हमें उत्साह मिलता है, और इनका ही वास्तव में अभ्यास करना चाहिए. But the whole world, and it's emphasized, takes care of the body. That's all they do. Or the mind, which is another extension of the physical body. पूरी दुनिया सिर्फ अपने शरीर की ही सेवा करती है या फिर अपने मन की. You look around, there's doctors, there's restaurants, food, medicine, clothing, everything is centered around keeping the body going, nourishing the body, steroids to make it stronger. तो हम अपने इर्द गिर्द unlimited. It's all about the body. हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं हमारे चारों ओर जितनी भी चीज़ हैं, डॉक्टर हैं, दवाएं हैं, खाना है, दवाइयाँ हैं, वह सब सिर्फ भौतिक शरीर को ही पोषण और उसको शक्ति देने के लिए है. But the devotees, what do they need to maintain the body? लेकिन शरीर का पोषण करने के लिए उसे क्या चाहिए? Prasad. प्रसाद. And a little rest. और थोड़ा सा आराम. अच्छा. And nice devotee association. और बढ़िया भक्तों का संग. Which gives nourishment to both the mind and the body and the soul. जिससे शरीर और आत्मा दोनों को पोषण मिल जाता है. The devotees can live simply and somehow rather tolerate the needs of the body and minimize it to the basic needs. तो इस तरह से भक्त लोग सरलता से रह सकते हैं और अपने शरीर की जो भी आवश्यकताएं हैं उनको कम करके रह सकते हैं. But to give up the attachment is difficult. लेकिन ये जो आसक्ति छोड़ना बहुत ही मुश्किल है. That's why we have days where we fast. इसीलिए हम उपवास व्रत रखते हैं. When he was translating yesterday, they were correcting him. Now you're translating and he's correcting you. I guess it's a team work. Huh? What to do? Maybe when you're on stage you get nervous, huh? I do too. But okay, so continue to work together. There's nothing wrong. So when we have fast days, sometimes we don't take any prasadam. We minimize even our sleep. We get a lot of energy. We actually feel good. तो जब हम उपवास करते हैं, शरीर की जरूरतों को कम कर देते हैं, तो हमें बहुत सारी ऊर्जा मिलती है. These fast days are days of depriving the body of its basic requirements, gives us an understanding how little it takes to maintain the body. तो ये जो उपवास के दिन है, हमें यह समझ देने के लिए है कि हमें शरीर का जो जरूरत पूरा करने के लिए कितना कम समय देना है. And that's the whole idea of Krishna consciousness, is to minimize time, effort, needs of the body, maximize our activities in devotional service. तो कृष्ण भावना अमृत का यही सिद्धांत है कि
कम करना है, कम करना है, कम करना है हमारे शरीर के लिए जो भी हम समय देते हैं और प्रयास करते हैं उसके लिए, और आध्यात्मिक सेवाओं के लिए हमें ज़्यादा प्रयास और ज़्यादा समय देना है. Because activities in devotional service are eternal, and the benefit is also eternal, whereas the body, whatever we do for it, the body will be finished in time, due course of time anyway. तो जो भी हम आध्यात्मिक सेवाएं करते हैं वो नित्य हैं और उनका फल भी नित्य है, लेकिन भौतिक शरीर तो वास्तव में वैसे भी अनित्य है. We had the example of in the 11th canto of the what was it, the Python man. He's called Python. Python is a snake, तो sarpa. 11वें स्कंद में हमारे पास अजगर या सांप का उदाहरण आता है. And his business was simply to stay in one place and not move. और उसका सिर्फ यही काम था कि एक ही जगह पर बैठा रहे और कुछ भी चले भी ना. And whatever comes, he takes. और जो भी खुद से आ जाए सिर्फ उतना ही ग्रहण करे. If nothing comes, और कुछ ना है तो he doesn't take. कुछ ना ले. Like that. That's also sometimes madhukari, right? तो इसको मधुकरी भी कहते हैं. You go out trying to get something, and whatever comes, you're satisfied. तो जैसे आप बाहर जाएं, कुछ भिक्षा लें, अगर जो भी आए उसमें ही संतुष्टि करें. So, but and sometimes they say Ekadasi means big feast, right? Which is supposed to be no food. कभी कभी लोग कहते हैं कि एकादशी का मतलब बिग फीस्ट, बहुत ही ज्यादा व्यंजन होने चाहिए, लेकिन एकादशी का मतलब है कुछ भी नहीं खाना है. Anyway, devotees love prasadam. जैसे भक्त लोग को तो प्रसाद बहुत ही पसंद है. And prasadam is spiritual. और प्रसाद आध्यात्मिक होता है. But the point is you have to see it like that. लेकिन तथ्य यह है कि आपको उस प्रकार से उसको देखना है. Because if you don't see it like that, then it won't have that same effect. क्योंकि आप अगर उस प्रकार से उसको देखेंगे नहीं तो उसका वही प्रभाव नहीं पड़ेगा. Yeah, so for devotees, they're happy if they get prasadam, and then the rest of the day they can do their service. That's all. तो भक्त लोग खुश रहते हैं अगर उनको बढ़िया से प्रसाद मिल जाए, उसके बाद दिन भर अपनी सेवा में लगे रहते हैं. Sleep. फिर सोना. Prabhupada 1974, he really dropped a bomb. You know, he said something that caused all of us great surprise. 1974 में श्रील प्रभुपाद ने कुछ ऐसा कहा जिससे हम सब बहुत ही ज्यादा अचंभित हो गए. The 4 bodily activities: eating, sleeping, mating, and defending. कि ये जो 4 भौतिक गतिविधियां हैं, खाना, पीना, सोना और मैथुन. And we always thought that the worst of the 4 is mating. कि हम हमेशा ही हैं, The most dangerous of the 4. कि हम सब हमेशा ही कहते हैं कि सबसे बुरा इसमें मैथुन है. Prabhupada said the most dangerous one is oversleeping. और श्रील प्रभुपाद ने कहा कि सबसे भयावह है ज्यादा सोना. Yeah, and we were thinking, is Prabhupada joking with us? और हमने सोचा कि क्या श्रील प्रभुपाद मजाक कर रहे हैं. And then there was questions, and Prabhupada responded. He says, yes, time in this body is limited. So we must use every bit of time to serve the Lord. Therefore, too much sleep just wastes time. क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने कहा कि यह जो भौतिक शरीर में हमारा समय है वह बहुत ही सीमित है, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की सेवा में लगाना चाहिए. He says it puts one on the bodily platform easier than it does all of the other activities. तो ऐसा कहते हैं कि सोना हमें आसानी से शारीरिक स्तर पर लेकर आता है. So we get an insight that how dangerous it is to waste time by sleeping too much. And what is too much then? Then that's another question. तो इस प्रकार से हम यह समझते हैं कि यह जो ज़्यादा सोना है यह कितना भयावह है, और यह ज़्यादा इसकी मात्रा कितनी है. Prabhupada said 6 hours a day maximum. श्रील प्रभुपाद ने कहा 6 घंटे अधिकतम नींद होनी चाहिए. But then he said maybe you might be working a little hard and you need a little extra. All right,
7 hours. श्रील प्रभुपाद ने कहा ठीक है, अगर मान लो बहुत आप कड़ी मेहनत करते हो तो थोड़ा सा अधिक 7 घंटे। But he said, don't sleep in class. उन्होंने कहा लेकिन आप कभी भी कक्षा में नहीं सोना। In one lecture, he said, sleep 13 hours a day, but don't sleep in Bhagavatam class. एक प्रवचन में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि दिन में 13 घंटे सो जाओ लेकिन क्लास में मत सो। When I joined the Hare Krishna movement, that was our biggest problem, staying awake in Bhagavatam. तो जब हम हरे कृष्ण आंदोलन से शुरुआती दौर में जुड़े थे तो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि भागवतम क्लास में जगे रहना, Because we were living on a farm community and devotees were working hard. क्योंकि हम फॉर्म कम्युनिटी में रहते थे और भक्त बहुत कड़ी मेहनत किया करते थे। And we were getting up 2:30 in the morning also. और हम सुबह 2-2:30 बजे उठ भी जाते थे। And then chanting our rounds, going to the morning program and working the whole day. फिर हम अपना मॉर्निंग प्रोग्राम करते थे, जप करते थे और पूरा दिन भर सेवा करते थे। And when it came to Bhagavatam class, और फिर जब ये भागवतम का समय आता था we would say there's 2 mantras, one for going to sleep and one for waking up. तो फिर वह सबके लिए सोने का तो दो भक्त होते थे, एक सुन 2 दो mantras, मंत्र होते थे, एक सोने one के for लिए, sleeping and one for waking. एक सोने के लिए और एक उठाने के लिए। The one for sleeping is Om Namo Bhagavate Vasudevaya. और सोने का मंत्र हुआ करता था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। And for waking up is Sadira Vidyajam Jitendriyataheka. और उठाने के लिए शरीर अविद्याजाल जड़ेंद्रियता है का। So fortunately, Prashadam follows Bhagavatam class. तो सौभाग्य से प्रसाद भागवतम कक्षा के बाद होता है। But I notice nobody sleeps here because I think they're afraid to. But at least when I was beginning my Krishna consciousness, the whole class would sleep. I mean, even the speaker. Really. लेकिन सौभाग्य से यहाँ पर कोई सोता नहीं है। लगता है यहाँ पे लोगों को डर लगता है सोने से। लेकिन जब मैं जुड़ा था तो उस समय सब लोग, पूरी कक्षा के लोग सोते थे, यहाँ तक कि जो कक्षा दे रहा है वो भी सोता था। There was one class where one devotee was giving the class and he was chanting that verse that Krishna speaks in the Bhagavad Gita. He went, Sarva Dharma Pradikshityam Mamekam Sadaram. एक भक्त प्रवचन दे रहे थे भगवद गीता पे। Raja Aham Tvam Sarvabhavam. Didn't miss a word. So we thought that was pretty good. Must some mystic power was there. एक भक्त थे, वह सोते सोते कक्षा देते थे और लगता है उनके पास कोई यौगिक शक्ति थी कि अगर कक्षा के बीच में कहीं सो जाए तो वापस वहीं से शुरू कर देते थे। So Prabhupada and the Acharyas, and it's also mentioned in the Shastras, that by controlling eating, we can control sleeping. तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि अगर हम खाने पे नियंत्रण करें तो सोने पे भी नियंत्रण कर सकते हैं। If you eat too much, you'll sleep too much. अगर ज्यादा खाएंगे तो आप ज्यादा सोएंगे। If you eat too little, you may also sleep too much. अगर आप बहुत कम खाते हैं तो भी आप ज्यादा सोएंगे। So therefore, Scripture, Krishna explains in the 6th chapter of Bhagavad Gita, one should be temperate in eating, sleeping, working, and recreation. He said, then one can practice successfully the yoga practice, the yoga system. इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं हर एक व्यक्ति को खाना पीना सोना अनुकूल तरीके से उचित मात्रा में करना चाहिए, तब वह योग का अभ्यास कर सकता है। No, that's the formula for actually increasing the quality of our devotional services, learning how to minimize the activities of this body down to the basic principles where we can focus completely on Krishna consciousness. तो सूत्र यही है कि हमें अपने शरीर की आवश्यकताओं को कम करना है, जिससे हम अपनी आध्यात्मिक सेवाओं पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सके। And here, what Brahman is saying, that when we realize we are different in the body, then we don't give the body so much attention anymore.
और यहाँ पर भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं कि अगर हम समझ लें कि हम यह भौतिक शरीर नहीं है तो हम भौतिक शरीर की क्रियाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं. When you think a rope is a snake, you become fearful. But then when you realize it's a rope, you're free from fear and you don't give much attention to the rope. तो जैसे कि मान लीजिए आप ये देखिए कि कोई जो रस्सी है अगर उसको आप सांप मान ले तो आप भयभीत हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उसको जान जाएं कि वो रस्सी है तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं. So it's a very basic principles are being said here, but it's the foundation for the execution of devotional service. That's why Krishna spends so much time and energy, effort, explanation to make it clear that the body is not the self and the body is also temporary where the self is eternal. तो यह बहुत ही जो है साधारण सा सिद्धांत है, लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण है. इसलिए भगवान इतना समय यहाँ बताने में व्यतीत करते हैं कि यह जो शरीर है वह नित्य नहीं है, बल्कि इसके अंदर का जो आत्मा है वह नित्य है. And then when the mind is free from all of the anxieties that come from taking care of the body, then one can focus completely on devotional service. तो अगर जो हमारा मन है इस विचार से मुक्त हो जाए कि वह यह शरीर है, तो वह पूरी तरीके से जो भक्तिमयी सेवाएं हैं उन पर ध्यान दे सकता है. And as it says here, then that focus becomes everything for the devotee's progress back home, back to Godhead. जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि यह जो विधि है वह उसका भगवत धाम जाने के लिए रास्ता बन जाती है. The indication here is, and Lord Brahma will explain it later on the same chapter, we have so many connections to this material world, and it's all due to one thing, the body. If there was no material body, there would be no connections to anything else. तो यह बात ब्रह्मा जी आगे अध्याय में भी बताते हैं कि हमारी इस भौतिक शरीर में, हमारी इस भौतिक जगत में जितने भी संबंध हैं वह सिर्फ भौतिक शरीर के कारण ही. अगर यह भौतिक शरीर ना हो तो इस जगत से हमारा कोई संबंध नहीं है. The body is not important, but it's required to be maintained at the minimum. That's all. यह शरीर बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी आवश्यकता है कि इसका कम से कम इसका देखरेख की जाए. But as one gets the higher taste by absorbing oneself in devotional service, where does the higher taste exist? Then all of these other things that are surrounding our devotional activities, which are about the body or the extensions of the body, just fall away automatically. लेकिन अगर हम जो उत्तम रस प्राप्त करने का अभ्यास करते हैं, जिसका अर्थ है अगर हम भक्ति में ही सेवाएं करते हैं जहाँ पर उत्तम स्तर का रस वास्तव में अस्तित्व रखता है, तो हमारे जो ये भौतिक धारणाएं हैं उनका धीरे धीरे अपने आप पतन हो जाता है. And you can't, as long as we have desires for enjoyment in this material world, you get a body. लेकिन जब तक आपके अंदर भौतिक जगत में भोग करने की इच्छा रहती है तब तक आपको शरीर मिलता है. And some people think, well, my body is better than your body. कभी-कभी लोगों को लगता है अरे मेरा शरीर उनके शरीर से अच्छा है. And they become proud because they have a good body, or at least apparently good body. फिर वो अहंकार में आ जाते हैं कि उनका बेहतर शरीर है. Sometimes it says a man's body is like a truck and a woman's body is like a sports car. और कभी-कभी कहते हैं कि जो आदमी का शरीर है वह एक ट्रक की तरह है और जो स्त्री का शरीर है वह स्पोर्ट्स कार की तरह है. Try to figure that one out. समझने का प्रयास करिए कैसे. There's more excitement in the sports car than there is in the truck, obviously. तो जो स्पोर्ट्स कार है उसमें ज़्यादा उत्साह रहता है. This is coming from, this is Niti Shastra. नीति शास्त्र में उल्लेख है. Yeah. So the point is, whatever particular body you have,
be satisfied and just use it for devotional service, because in due course of time it'll be gone. तो तथ्य यह है कि आपके पास जो भी शरीर है आप उसी में संतुष्ट रहिए, क्योंकि कुछ समय के बाद वह चला जाएगा. Okay, any questions, comments, anything? Yes, all the way in the back. Hare Krishna Maharaj. Thank you so much for the amazing class. Question about when you mentioned taking care of the body. So in Brahmacharya ashram, sometimes we observe the scenario that there are two extremes. Some of the devotees, they don't take care of the body. They don't take medicines also. But when they fall into greater problem, then they're full of anxiety. But some other devotees, they take care of the body so much that hardly any time is there for any services. So what is the balance? How to understand? Yeah, well, Krishna explains in the Bhagavad Gita, in the middle road, not too much, not too little. What is required. And people have different requirements depending on the type of body they have, because everyone's body is different. So there is an old saying, not an old saying, but a statement, know thyself. Know what you need to keep body and soul together so you can execute your devotional service. And that comes by way of trial and error. We learn. But the question is to keep our intentions not towards the body, but towards the spirit. That, yes, my desire is to become more and more absorbed, engaged in Krishna consciousness. Not that I'm going to just do the minimum in Krishna consciousness, and then whatever time's left, I'll just take care of the body. Devotees always thinking how to increase their service, how to put better quality in their activities, and also how to increase in quantity when it's possible. And therefore, taking care of the body becomes secondary at best. But you can't crash the gates of heaven simply by quick renunciation. Let me give up everything. We saw that in the early days of Krishna consciousness. There were devotees that wanted to give up everything and just engage in devotional service. But they couldn't maintain it because it was artificial. So it's a gradual process. In a particular mood that let me use more time, energy, and facilities that are available for devotional service. Let me keep body maintenance at a minimum. So one should find that minimum, not the maximum. That's the point. Minimize the needs of the body. And Prabhupada was saying, he said, you see in the material world, as people get older, they become more attentive to their material body. They sleep more, especially he was talking about sleep. But he says devotees, as they get older, they sleep less. Because the soul is developing more in its relationship with Krishna, so the need for the body becomes less. Srila Prabhupada was the prime example. And Prabhupada would talk about his schedule. He would take rest between 10:30 and 11 o'clock at night. And then he would wake up 12:30, maybe an hour and a half, sometimes 2 hours. And then he would translate Bhagavatam to about 4 in the morning. And then he would chant japa to about 6. And then 6 o'clock, he would go on morning walk and wind up at the temple,
greet the deities, give the Srimad Bhagavatam class, come back to his place, take breakfast, and then he would rest for another hour. And then the morning was usually answering letters or getting massages mostly. And then after lunch he would sleep again for about another hour. People would say Prabhupada was not sleeping. He would lay, and he was always aware of what was going on in the room while he was resting. He was like in what we call a partial sleep, just resting, rather than deep sleep. And so, and Prabhupada was like, you know, his body wasn't so healthy either, but he was completely on the spiritual platform. So he took good care of his body just to the minimum, especially when it came to sleep, particularly. And we see that there's others who are like that. If you practice giving your body less eating and less sleeping, you'll see you can adjust after some time. It becomes natural. But not at the expense of becoming tired or unable to do your service. That's where you have to find that balance. Something to develop, something to work on. Om Namo Bhagavate Vasudeva. Now he will give class. प्रभु ने प्रश्न किया था कि जैसे कि हम आश्रम में देखते हैं कि हमें शरीर का ख्याल रखना चाहिए, महाराज ने जैसा बताया, लेकिन आश्रम में देखते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं। कुछ भक्त होते हैं जो कि अपनों को इस तरीके से आचरण करते हैं कि अपने शरीर का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं, दवाई भी नहीं लेते हैं, लेकिन फिर जब उनका तबीयत खराब होती है तो पूरा का पूरा चिंता से भर जाते हैं। और दूसरी तरीके के भक्त इस प्रकार के होते हैं कि वो पूरा टाइम शरीर का ही ख्याल रखते हैं और कुछ भी सेवा नहीं करते। तो ये जो संतुलन है उसको किस प्रकार से बना कर रखा जाए? तो महाराज ने उत्तर दिया कि भगवान श्री कृष्ण इसीलिए बताते हैं कि हमें बीच का रास्ता देखना चाहिए, यानी कि बहुत ही ज़्यादा किसी भी चीज़ की अति नहीं करना चाहिए। लोग जो हैं उनकी जो आवश्यकताएं हैं वह अलग अलग हो सकती है हर एक व्यक्ति की, क्योंकि सबका शरीर भिन्न है, लेकिन फिर भी व्यक्ति को इतना ही करना चाहिए जिससे कि वह अपने शरीर और आत्मा को एक साथ रख सके। तो हमारा जो इरादा होना चाहिए वह हमारा शरीर का नहीं बल्कि हमारी आत्मा का ख्याल रखना होना चाहिए। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि जो हमारी आत्मा है वह ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण भावना भावित वाली सेवाओं में लगी रहे। ऐसा नहीं कि कम से कम कृष्ण भावना भावित वाली सेवाएं करें और ज़्यादा समय शरीर की सेवाएं करें। जो भक्त हैं उनका मनोभाव होना चाहिए कि वह जो सेवा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकें और उनकी गुणवत्ता भी बढ़ा सकें। तो ऐसा करने पे जो शरीर की आवश्यकता है वह अपने आप द्वितीय स्तर पर आ जाती हैं, लेकिन हमें बहुत ही जल्दी वैराग्य भी अभ्यास करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। शुरुआती दिनों में हम देखते हैं कई भक्त कृष्णा भावनामृत में आए थे और बहुत अच्छे से प्रयास करते थे, लेकिन वह ज़्यादा समय तक उसका पालन नहीं कर पाए, क्योंकि यह जो भक्ति है यह धीरे धीरे प्रगति करने वाली प्रक्रिया है। तो भक्त का जो मनोभाव होना चाहिए वह अपना समय, सारी सुविधा और ऊर्जा का प्रयोग कृष्ण की सेवा में करना चाहिए, शरीर के लिए नहीं। और इसके लिए हमें ये जो सबसे कम से कम आवश्यकता है उसका पता लगाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस भौतिक जगत में जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो अपने शरीर का ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो भक्त लोग हैं वह कम सोना चालू कर देते हैं, क्योंकि यह जो आत्मा है वह भगवान कृष्ण के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संबंध विकसित करने लगती है, इसलिए जो शरीर की आवश्यकताएं हैं वो कम हो जाती हैं। श्रील प्रभुपाद का उदाहरण हम खुद देखें कि अगर हम उनकी समय सारणी की बात करें तो श्रील प्रभुपाद रात को 10:30-11 बजे तक एक दो घंटे ही सोते थे, फिर उठ के भागवतम का अनुवाद किया करते थे, फिर 4 बजे तक फिर अपना जप करते थे 6 बजे, फिर 6 बजे प्रातःकालीन भ्रमण के लिए चले जाते थे, फिर
वापस आते थे, दर्शन आरती करते थे, भागवतम क्लास देते थे, फिर अपना प्रसाद लेते थे, फिर मसाज लेते थे, और उसके बाद फिर दोपहर का प्रसाद लेने के बाद थोड़ा समय फिर विश्राम लेते थे। और इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद वैसे कभी भी पूर्ण निद्रा में ऐसा बोलते हैं कि वो नहीं जाते थे, वह हमेशा इस बात के लिए जागरूक रहते थे कि उनकी इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तो इस बार से हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद बहुत ही ज़्यादा सचेत थे कि उनकी सभी जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं, विशेषकर जो नींद है, वह कम से कम के स्तर पर रहे। तो अगर आप इसका अभ्यास करते हैं, कम खाने का, कम सोने का, तो यह स्वाभाविक हो जाएगा और आप संतुलन ढूंढ लेंगे। Thank you. Okay. Anything else? Anyone else? Bodily concept of life. Anything else? Okay. Time for prasad. But don't go to sleep after. Srila Prabhupada ki. Srimad Bhagavatam ki jai.